Hello guys, my name is Aman and today I will be delivering one knowledge sharing on Linux. आज हम बात करेंगे क्या Linux क्या है, Linux कब मार्केट में आया, जो अपना करियर Linux में बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशली वीडियो बनाई है मैंने। तो लेट्स स्टार्ट। तो Linux स्टार्ट करने से पहले मैं एक टर्म और एक टेक्नोलॉजी डिस्कस करना चाहूँगा इन नॉलेज शेयरिंग। यूनिक्स यूनिक्स क्या है, ये कब मार्केट में आया, क्यों आया, क्या यूज़ था, इसके बारे में हम पहले कुछ नॉलेज गेन करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट लिनक्स। सो लिनक्स एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ था और इन्वेंट हुआ था in 1969। Who has developed this operating system and why? We will discuss about that। इसकी नीड क्या पड़ी थी, we will discuss about that। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता था ओनली CLI। CLI is nothing but a command line interface। Command line interface means we can just write out the command instead of any graphical interface। like हमें आज विंडोज़ में हमारे पास सब कुछ ग्राफिकल वे होता है, हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम में सब कुछ माउस के थ्रू हम ऑपरेट कर सकते हैं। कोई भी माई कंप्यूटर में जाना हो, किसी भी आइकन में जाना हो, वी हैव ग्राफिकल इंटरफेस, बट दैट टाइम इन द यूनिक्स इट वाज कमांड लाइन इंटरफेस। This was written in language C। Dennis Ritchie and Ken Thompson। in AT&T lab। So C was developed in 1971 and Unix was developed in 1969। But as I said, language C was used in Unix, but C was developed in 1971। So first Unix was introduced in assembly language instead of C language। पहले ये असेंबली लैंग्वेज में लिखी गई थी इस ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड। देन 1971 में कंप्लीट कोड 100% सी में लिखा गया था। in 1972 to 73। तो यूनिक्स हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जो 1969 में डेनिस रिची एंड कैन थॉमसन ने डेवलप किया था इन असेंबली लैंग्वेज। लेटर ये सी लैंग्वेज में यूज़ किया गया था। तो वाई आई एम टेलिंग अबाउट दिस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज सबसे पहले यूनिक्स आया था, उसके बाद लिनक्स आया था बाय एडिंग सम फीचर, सम फंक्शनैलिटी जो इसकी ड्रॉबैक थे यूनिक्स की, जो लिनक्स मैंने ओवरकम किए। तो यूनिक्स की सबसे अच्छी फंक्शनैलिटी क्या थी, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। जब पहले हमारे पास MS DOS था
which was introduced by the Microsoft, by the Bill Gates, which was only running over the Windows, राइट। तो उस का मेन फीचर यही था कि एक डिपेंडेंसी थी कि हमारा एम एस डोस हमेशा विंडोज़ पे चलेगा, राइट। सो देयर वाज ए हार्डवेयर डिपेंडेंसी। देन यूनिक्स जब डेवलप हुआ था, which was very costly in the beginning, which can be taken care by or purchased by the higher organizations, and वही जो मल्टी मिलियनियर कंपनीज थी वही यूनिक्स को अफोर्ड कर पाती थी। क्यों? बिकॉज इट वाज हार्डवेयर डिपेंडेंट। दिस वाज आल्सो ए हार्डवेयर डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें एक हार्डवेयर चाहिए होता था। सो देयर वाज ओनली 3 कंपनीज विच वर using this Unix as a flavors. Let's discuss about those flavors or the companies. तो हमारे पास 3 कंपनीज थी यूनिक्स फ्लेवर्स के लिए, who was providing मार्केट में। इन 3 कंपनीज के अलावा किसी और के पास वो हार्डवेयर और वो ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रीडम नहीं थी। जो फर्स्ट कंपनी थी रखा था यूनिक्स में पेरिस। देन नेक्स्ट कंपनी थी एचपी, और उसके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था एचपी यूएक्स। The next company was IBM and their operating system was named as AIX. So जिस organization को Unix flavor यूज़ करना होता था, they have to purchase their hardware as well to run their operating system. अगर किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी स्टार्टअप कंपनी को यूनिक्स फ्लेवर यूज़ करना होगा, they have to purchase their hardware as well to run their operating system. We can't run any Unix flavor on any other hardware. Like if you want to install operating system Unix on your Dell laptop or HP laptop, which is not recommended and which is not possible. So उन organizations को हमेशा ये हार्डवेयर परचेज करना होता था, विच वॉज वेरी कॉस्टली। सो दिस वॉज समथिंग अबाउट द यूनिक्स। सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ लिनक्स। व्हाट इज लिनक्स? होप नाउ यूनिक्स इज क्लियर व्हाई यूनिक्स was very costly, why it was hardware dependent, because their code can be run on their specific hardware only. So let's talk about now Linux. Let's open in the separate window. So अब हम बात करेंगे लिनक्स के। सो लिनक्स क्या था? एक सबसे पहले इसे नाम दिया open source OS. Why we call some operating system or some software as a open source?
ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑल। कोई भी मार्केट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी नॉर्मल यूज़र, कोई भी नॉर्मल person is always free to use this source code or the source code for the Linux or the Linux operating system। कोई भी organization always free है इस Linux operating system को use करने के लिए। Why this is available and why it was not available in the Unix? Because Linux is a kernel based ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब भी हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, वी हैव फ्रीडम और वी आर वेरी फ्री टू राइट और अपडेट इट्स सोर्स कोड। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज ए सोर्स कोड अवेलेबल एंड द ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। हम किसी कभी भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड को अपडेट कर सकते हैं, इसलिए ये ओपन सोर्स है। बट वी इन दिस यूनिक्स वी वर नॉट एनी राइट्स टू अपडेट इट्स सोर्स कोड। अगर हम इसके सोर्स कोड को अपडेट करेंगे तो ये उस हार्डवेयर पे सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो रिटर्न ही इसी लैंग्वेज में और कोड में हुआ है कि वो इसी हार्डवेयर पे विदाउट एनी चेंजेस रन करेगा। बट यूनिक लिनक्स के केस में ऐसा नहीं है। सो इट इज़ completely free in the market and everyone has the freedom to use this operating system. Okay, so it was developed in the 1991 में इसका इंट्रोडक्शन, and it was developed in the market by Linus लिनस टोरवाल्ड ने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्वेंट किया था। was written C and C++। यूनिक्स में सिर्फ कोड हमारा C में लिखा गया था, बट इसमें C और C++ यूज़ की थी। एंड इट सपोर्ट्स बोथ CLI एंड GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये दोनों सपोर्ट करता था, CLI एज वेल एज ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मीन्स जब हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डालते हैं, इंस्टॉल करते हैं ऑन सम हार्डवेयर, वी हैव बोथ ऑप्शन। वी कैन यूटिलाइज और ऑपरेट दैट ऑपरेटिंग सिस्टम बाय द CLI और एज वेल एज बाय द ग्राफिकल मोड। एंड इट was launched in the Helsinki Unix was developed in the AT&T lab by Dennis and Ken, and Linux was introduced by Linus. That's why इसका name Linux पड़ा था। Hope is that clear? So that we will move next. Also हम Linux को GNU भी कहते हैं। GNU. What is GNU? Generally not Unix, बिकॉज ये यूनिक्स नहीं है बट यूनिक्स की तरह ही काम करता है। जब हम इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन, आई विल शो यू। बिल्कुल लिनक्स एंड यूनिक्स लुक्स क्वाइट सिमिलर, बट लिनक्स इज नॉट ए यूनिक्स। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज GNU, जनरली नॉट यूनिक्स। सो अभी तक हमने क्या सीखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास मार्केट में, लाइक इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, लाइक वी हैव वन लिनक्स। फर्स्ट वी टाइप एज ए यूनिक्स बिकॉज ये सबसे पहले आया था। Then we have Linux,
In the market we have other OS as well, like Windows. अब फ़ोन पे जो आ गए हमारे एंड्रॉयड, हमारे टीवी में भी एंड्रॉयड यूज़ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. So there are multiple, but we will keep on talking about the Linux and Unix. Okay. So we will just talk about this Unix and Linux. So Unix का हमने क्या सीखा? Unix हमारा हार्डवेयर डिपेंडेंट है. कॉपीराइट्स हैं उन ऑर्गेनाइजेशन के पास जिनके पास यूनिक्स कोड अवेलेबल है, बट नॉट फॉर एवरीवन. एंड इफ यू टॉक अबाउट लिनक्स, ये हमारा हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है. एंड इट इज ओपन सोर्स, फ्री टू यूज़. हम कोई भी यूज़र लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कभी भी इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी हार्डवेयर पे. एंड हार्डवेयर, इट्स नॉट लाइक एनी हार्डवेयर वी कैन टेक. एवरी हार्डवेयर देयर शुड बी सम प्री रिक्विजिट टू यूज़ द लिनक्स एज वेल, जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए होती है हार्डवेयर पे. ओके. So this is the difference between the Linux and Unix. तो अभी Linux और Unix, अगर हमारे पास दो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मार्केट में अब कौन सा ज़्यादा यूज़ हो रहा है? तो अब ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अब मार्केट में, ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज़ में, ऑल द आईटी कंपनीज़ में सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ हो रहा है? सो टुडे 99% in the market of organizations of the enterprise all are using in the infra. 99% they are using on Linux. Without Linux in the world, we can't even imagine any of the organization if they are not using Linux. So जो भी इस Linux में अपना करियर बनाना चाहते हैं, so it is very good to start with the Linux. They can grow up with their career in this technology. Let me show you usage of operating system now in the market. Yeah, if we go to the wiki page, I can show you. Yeah, this one. So these are the operating system, like Mac OS कितना यूज़ हो रहा है, डिवाइस शिपमेंट कितनी हो रही है डेली, विंडोज़ कितना यूज़ हो रहा है, अदर्स कितना यूज़ हो रहा है. बट हम बात करते हैं इस पिक्चर के बारे में. इट विल शो यू. let me download and show you. Okay, let me show you directly here. You can see here in the 1995 Unix was used huge amount, 100% it was used in from 1995, and before 2000, like when I said 1969 it would introduce Linux, and from 72 to 73 years it was started using with the C and C language 100%.
उसके बाद मार्केट में आज तक लिनक्स ही यूज़ हो रहा है, बिकॉज इट इज़ फ्री टू यूज़. नो वन वांट टू pay other higher amount to the other organization like HP, IBM and Sun for Unix operating system. They are directly freely using this Linux. So you can see this green कितना यूज़ हो रहा है मार्केट में. इसलिए इस टेक्नोलॉजी का बूम मार्केट में हमेशा है, अभी तक है और इन फ्यूचर भी रहेगा. Okay, so this is all about Linux and Unix and what is the difference between Linux and Unix. Now we will talk about Linux flavors. हमने अभी बात की थी Unix के कौन कौन से फ्लेवर हैं, Solaris, HPUA and AIX. Now we will talk about Linux flavor. लिनक्स के फ्लेवर कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल हैं. जैसे यूनिक्स के थे वैसे ही लिनक्स के भी कुछ फ्लेवर्स हैं, बट कौन कौन से फ्लेवर हैं, लेट्स टॉक अबाउट दोस. सो फर्स्ट वन इज रेड हैट. सबसे पहला फ्लेवर है जो आज तक यूज़ में आ रहा है और आई बिलीव कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग इट विल बी कीप ऑन यूजिंग Red Hat. Next flavor is Ubuntu. Next flavor is CentOS. CentOS or CentOS, you can say. Then Debian, SUSE Linux. There are multiple flavors in the market and रेड हैट जो है एक कंपनी भी है जो अपने तो फ्लेवर मार्केट में यूज़ कर रही है एंड बाय यूजिंग बाय अदर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. वन इज फेडोरा and another is RHEL. We will talk about later in other knowledge sharing session, but these are the two flavors used by Red Hat company जो और other organization भी use कर रही हैं freely. It's not like that everyone can use this freely. There would be obviously some proprietary used by this Red Hat as well. जब हम इसके कंपनी के बारे में बात करेंगे आई विल टॉक अबाउट दोज एज वेल विच आर फ्री एंड विच आर नॉट फ्री. सो दीज आर द मल्टीपल फ्लेवर्स एंड लेट मी शो यू मल्टीपल फ्लेवर्स एज वेल विच इज़ बीइंग यूज्ड बाय लिनक्स. Flavors of operating system. Seeing the images, yeah, and this available in the wiki page. Yeah, so this is the Linux distribution timeline. 1992 में, as I said, it was introduced and started using. उसके बाद ये कितने फ्लेवर्स मार्केट में आए हैं, all are available from there. If I show you from this, Debian is there. So ये multiple flavors क्यों हैं? SUSE Linux है. So as I said, Linux is a open source. Everyone have rights to update their code, freedom to update their code, so that according to their requirement they can update their code and make new flavors. So when it was introduced in 1992, started using it, then let's say example for this was updated in 2000 year and it was given name as a vector Linux.
सो सिमिलरली अदर फ्लेवर्स भी हैं जो टाइम वाइज अपडेट हुए हैं एंड दे हैव नेम्ड एज ए डिफरेंट flavor. So we have multiple flavors, 300 plus flavors we have for the Linux. So there would be one Fedora, Linux or Red Hat as well, जो बाद में source code change कर करके वो अपने according to the requirement that has been changed to the new flavor. See, Ubuntu Genome, Ubuntu Pack. So all these are flavor. So do we need to learn each and every flavor? So answer is no. We don't need to learn every flavor. We have to be very confident, very good in the base of the Linux. हमें लिनक्स का बेस समझने की नीड है, बस उस पर ऑपरेट कैसे कमांड लाइन रन करनी है. देन वी कैन यूज द सेम वे in the other flavors as well. There would be some minor changes in the syntax, but rest everything would be same. So yeah, so wanted to show you Reddit as well. It was showing. Yeah, see here. यहाँ पे जब रेडिट था इसमें कुछ इसके कोड में चेंज करके उन्होंने CentOS बनाया. So these all are different flavors inside which is having the base same Linux and the Red Hat Enterprise Linux. उसमें कोड में चेंज करके उन्होंने CentOS बनाया, some other flavor बनाए. So we don't need to learn each and every flavor. We will just learn Linux by Red Hat. So what we have learned, so we have 300 plus flavors for Linux. 300 plus flavors for Linux. So hope I am able to clear some knowledge on Linux and Unix. like कब Linux इंट्रोड्यूस हुआ, कब Unix की जो डिपेंडेंसी थी वो ओवरकम की Linux में. So we will be continue our knowledge sharing in further sessions. So hope after this session you all will be able to say, yeah, I know what is Linux at least. Then we will move to the next session. थैंक यू. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें. जिन्होंने लिनक्स सीखना है, जिन्होंने अपना करियर बनाना है, जिन्होंने अपना करियर लिनक्स से स्टार्ट करना है. सो थैंक यू.